In the name of Allah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, today's subject is EVS of class 4th primary, and our today's topic is a visit to Jammu in Kashmir. Lecture 2nd. Dear students, continuing the topic that is a visit to Jammu and Kashmir. So in today's lecture we will know about rivers and mountains of Jammu and Kashmir. Dear students, so start our today's lecture. On both sides of the roads, you will find so many different kinds of trees. All along you can see thick forests and narrow mountain roads. These roads have been built by cutting the mountains on one side are tall mountains and on the other side is the deep river. Can you hear the noise of the Chenab river? It follows it flows through an awesome valley. How fast the river flows, jumping all the way. Perhaps the river wants to say how I have made my way through these mountains. This is what the river says. Of course, if we make up our mind, we also can easily cross the mountains. During heavy rains, these roads often get blocked, and some places many times rocks and trees fall across the roads and block them. On these high mountains, sometimes we get snowfall instead of rain. So, heaps of snow blocks the roads here. On such occasions, if it becomes necessary to clear and repair the roads quickly. Imagine what you will do if you are to do this kind of work. If you are to do this kind of work in such a severe cold climate. Dear students, on both sides of the road you find so many different kinds of trees. सड़क के डियर स्टूडेंट सड़क के दोनों तरफ आपको मुख्तलिफ किस्म के दरख्त देखने को मिलेंगे. All along you can see thick forests and narrow mountain roads. आप सब घने जंगलात और तंग पहाड़ी सड़कें देख सकते हो. These roads have been built by cutting the mountains. ये सड़कें पहाड़ों को काट कर बनाया गया है. On one side are tall mountains and one side the other and on one side are tall mountains and on the other side is the deep river. Dear students, एक तरफ ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ गहरा दरिया है. It flows through an awesome valley. Can you hear the noise of the Chenab river? क्या आप दरियाई चनाब का शोर सुन सकते हो? How fast the river
flows the way. Perhaps the river wants us to say. ये दरिया एक ज़बरदस्त वादी से गुजरता है। ये दरिया कितना तेज़ बहता है। पूरे रास्ते से कूदता है, जिसे शायद ये दरिया कहना चाहता है। How I have made my way through these mountains. This is what the river says. Of course, if we make up our mind, we also can easily cross the mountains. शायद ये दरिया कहना चाहता है कि कैसे मैंने इन पहाड़ों के जरिए अपना रास्ता बनाया है। यही बात है जो ये दरिया कहना चाहता है। बेशक अगर हम अपना जहन बनाएंगे या अपने आप को तैयार करेंगे तो हम इन पहाड़ों को भी आसानी से अबूर या पार कर सकते हैं। During heavy rains, these roads often get blocked at some places. भारी बारिश के दौरान ये सड़कें अक्सर कई जगहों पर ब्लॉक होती है या बंद होती है। Many times rocks and trees fall across the roads and block them. अक्सर ये सड़कें चट्टानें और दरख्तों के गिरने से ब्लॉक होती है यानी बंद होती है। On these high mountains, sometimes we get snowfall instead of rain. कई बार इन पहाड़ों पर हमें बारिश के बरकस बर्फबारी देखने को मिलती है। यानी on these high mountains, sometimes we get snowfall instead of rain. कई बार इन पहाड़ों पर हमें बारिश के बरकस बर्फबारी देखने को मिलती है। तो so heaps of snow blocks the roads here. तो बर्फ के ढेर भी सड़कों को ब्लॉक करते हैं, बंद करते हैं। On such occasions, it becomes necessary to clear and repair the roads quickly. ऐसे मौकों पर ये बहुत अहम और ज़रूरी होता है कि सड़कों को जल्दी ही सफाई और मरम्मत की जाए। Imagine what you will do if you are to do this kind of work in such a severe cold climate. आप अंदाज़ा लगाओ आप क्या कर सकते हो अगर आपको ऐसे सख्त सर्दी के मौसम में ऐसा काम करना पड़े। Dear students, inshallah in next lecture we will know more about Jammu and Kashmir. So this was all about today's lecture. So be safe. Khuda Hafiz.